Hello students, welcome you all to our fourth session of our chapter number 10, that is light, reflection and refraction. Okay students, in this session we are going to start with refraction of light. Till now we have finished the reflection of light, to do refraction of light. So what do you mean by refraction of light? First of all, let us go for the definition refraction of light. So refraction of light means bending of light when it passes from one medium to another medium at an angle. When a light ray passes from one medium to another medium. What do you mean by medium? Air is a medium, glass is a medium, water is a medium. So whenever a light passes from one medium to another medium, it doesn't go through the same path, it bends away from its path. अपने path से थोड़ा भटक जाता है. That bending of light is known as refraction of light. Here you can see that, here you can see that it is the surface of the medium. Here the one medium, first medium is air and the other medium is water. So when the light ray is passing from one medium to another medium, it is bending towards the normal. Normal means perpendicular. Okay, एक medium से दूसरे medium में जब भी light जाता है तो वो bend हो जाता है. That bending of light is known as refraction of light. And why the light wave bends? ये bend क्यों होता है? The wave bends because of what? Because of the change in the speed when it enters a different medium. जब वो एक medium से दूसरे medium में आता है तो उसकी speed change हो जाती है. And due to the change in the speed, it bends from its path. Instead of going through the original path, it is bending away from its path because its speed changes. So once again, what do you mean by refraction of light? Refraction of light means bending of light when it passes from one medium to another medium. And why the light bends? Because its velocity changes when it passes from one medium to another medium. Okay, here you can see that there is an incident ray. Okay, when it is passing from air to water. Okay, it is bending towards the normal. Therefore, instead of going through this path, it is bending towards the normal. This is incident ray and this is known as refracted ray. Okay, what are the examples of refraction? Students, in the lower classes you might have studied that when in a glass full of water, you keep a pencil. At the surface of the water, you can see that the pencil appears to be broken. Okay, हमको ऐसा लगता है कि पेंसिल टूट गया है. एक कांच के ग्लास के अंदर अगर हम पानी भरे और एक पेंसिल को रखें तो जहाँ पे वाटर का सरफेस होता है वहाँ पे आप देखोगे कि पेंसिल टूटा हुआ लगेगा. दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, अनदर एग्जांपल इज व्हाट? व्हेन इन अ ग्लास you keep a coin. एक कांच के ग्लास में कॉइन रखो नीचे. Okay, and you pour water in that glass. You will see that the coin will appear to be raised. Okay, ऊपर आ जाता है, ऐसा लगता है कि कॉइन हमको ऊपर दिखाई दे रहा है. Okay, that is also an example of what? Refraction. Okay students, now we are going to start with the another topic, that is refraction of light through a rectangular glass slab. What is a rectangular glass slab? A cuboidal shaped made up of what? Glass. Okay, पूरा कांच का एक cuboidal shape जो बना होता है उसको हम बोलते हैं rectangular glass slab. अपना जो मैच बॉक्स होता है ना उसी शेप में पूरा है ना कांच का बना हुआ होता है. That is called rectangular glass slab. Okay, so we are going to study refraction through a rectangular glass slab. Okay, obviously बात है, this is a rectangular glass slab जो हमने उसको पेपर पे रखा तो इस तरह से rectangular शेप में आएगा. तो एक मीडियम एयर है. Okay, the light is passing from air to glass. Okay, light एयर से ग्लास में आएगा, फिर से ग्लास में से कहाँ जाएगा? एयर में आ जाएगा. Okay, the light is entering from air to glass and after passing through the glass it is again entering towards the air. So first medium is air, second medium is glass, third medium is again air. Okay, here the refraction of light will take place. Now how will the refraction of light take place through this glass slab? We have to study. Okay, the first ray which is getting incident on the surface is incident ray. This is the incident ray. Okay, now we all know that air is a rarer medium and glass is a denser medium. Rarer medium means what? पतला medium. Okay, and denser medium मतलब गाढ़ा medium. Here air is a rarer medium and glass is a denser medium. So when the light ray passes from rarer medium to denser medium, it will bend towards the normal. ये देखो normal के तरफ bend हो गया. याद रखना, whenever a light ray passes from rarer medium to denser medium, it will bend towards the normal. एक्चुअली इसको जाना ऐसे था लेकिन ये बेंड हो गया. ओके, क्योंकि ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. एंड व्हेनेवर अ लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर, अगर ये डेंसर है और ये रेरर है और लाइट रे ऐसे आया तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ओरिजिनल पाथ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, वंस अगेन व्हाट आई टोल्ड यू, व्हेनेवर अ लाइट रे पासेस फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा. And whenever a light ray passes from denser to rarer medium, it will bend away from the normal. अपने original path से उल्टा दूर हो जाएगा.
और ये ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगा, ऐसे पास में आ जाएगा नॉर्मल के। तो हियर इन दिस केस द लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सो द लाइट रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज θ1 and the angle of refraction is θ2. ये θ1 angle of incidence and θ2 is angle of refraction. Now this refracted ray will move towards this side and it will again strike on the other surface of the glass slab. इधर से इंसिडेंट हुआ और यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ, अब ये सीधा आएगा ग्लास स्लैब के ऊपर, यहाँ पे टकराएगा। Now from here the light ray is going from glass to air. ग्लास से कहाँ पे जाने वाला, अभी एयर में। So it is traveling from denser medium to rarer medium. ओके, पहले वाला केस क्या था, rarer to denser, so it is bending towards the normal. Now second case is that it is moving from what, denser to rarer. Okay, so it will move away from the normal. तो देखो ये लाइट रे जैसे यहाँ पे टकराया तो ऐसे नहीं जाके नॉर्मल से थोड़ा दूर हो गया, नॉर्मल से थोड़ा दूर हो गया। So this ray is known as emergent ray. What is it known as? Emergent ray. So this is your incident ray, this is your refracted ray, and this is your emergent ray. And here this angle is known as angle of emergence. What is it known as? Angle of emergence. Angle of incidence, angle of refraction. ये θ2 तो ये भी θ2 होगा। क्यों θ2 होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे alternate angles। देखो Z shape में, can you see the Z shape? This and then this. This is the Z shape. ये Z shape में जो एंगल बन रहा है, okay, so these both are alternate angles. So this is θ2, also this is θ2. Alternate angles हमेशा same होते हैं. And this is θ3. This is called angle of emergence. Angle of incidence, angle of refraction, and angle of emergence. Okay. So for a rectangular glass slab, always the angle of incidence, that is θ1, is equal to angle of emergence, that is θ3. ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे. That you have to remember. For a rectangular glass slab, angle of incidence is equals to angle of emergence. And one more thing, अगर ये लाइट पूरा बेंडिंग नहीं हुआ होता, if the light wouldn't have bent, okay, so what would happen? ये इंसिडेंट लाइट रे ऐसे स्ट्रेट चले जाता, डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, स्ट्रेट ऐसे जाता, but it has not gone like that. It has bent once here and bent twice here. Okay, एक बार इधर और एक बार here. Okay, first time it is towards the normal, second time away from the normal. So this would have been the path if it have not been bent, but after getting refracted twice, this is the path now. So ये जो displacement हुआ है, actually जाना चाहता है ऐसे लेकिन गया ऐसे है, इतना जो displacement हुआ है, that displacement is known as lateral shift. What is it known as? Lateral shift. What is the lateral shift? The displacement of the light ray from the actual path. ये होना चाहिए actual path, but now it is here now. So this displacement, this much displacement is known as lateral shift. इतना shift हो गया, so it is known as lateral shift. Students, it is a very important concept. What is refraction of light by rectangular glass slab? Here in the whole, on the whole, यहाँ पर क्या सीखा हमने? That there is one incident ray. After getting refracted, it bends towards the normal because it is moving from rarer to denser medium. Now once again it will refract here. Now it is moving from denser to rarer medium, so it will bend away from the normal. Okay, this angle of incidence is always equals to angle of emergence. Okay, this much we have studied. Now, if the light ray wouldn't have bent, okay, what would happen? It would have gone through this path, dotted line जो दिखाया हुआ है. But after bending twice, it is moving from this path. So this displacement which has happened, it is known as lateral shift. What is it known as? Lateral shift. Okay, students. Now, let us move forward towards laws of refraction of light. Okay, जैसे हमने laws of reflection of light देखा था, in the same way laws of refraction of light. So which are the laws? First law is the same. The incident ray, the refracted ray, and the normal. Okay, on the point of incidence, they all lie in the same plane. Incident ray, refracted ray, and the normal, they all lie on the same plane. That is the first point. Second point is very important. Second point is the ratio मतलब upon में, of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always equals to constant. Okay, किसका ratio? Sine of angle of incidence मतलब ये. Okay, what is sine now here? ये sin sin नहीं बोलना, it is sine. So students, in mathematics, in our 10th standard mathematics, we are going to study about trigonometry. We are going to study about trigonometry. In that trigonometry, you will study about sine, cos, tan, sec, cosec, cot. All those trigonometric functions you are going to study. उसमें से एक trigonometric function है sine. इसको sin नहीं बोलने का sine.
ओके तो ये जो है ना एंगल्स के ऊपर लगते हैं, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रेशियो है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट. इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड द सेकंड लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ. साइंटिस्ट स्नेल के नाम पे रखा गया है. द सेकंड लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ. Okay students, so once again which are the laws of refraction of light? Incident ray, refracted ray and the normal, they all lie on the same plane, and the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, it is equals to constant. That is the Snell's law. Now comes the topic refractive index. What do you mean by refractive index? तो इसको हम रीड कैसे करते हैं? Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको डिनोट करते हैं n21. हाउ विल यू रीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1? दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, v1 अपॉन v2. v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और v2 होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. सो वंस अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इट इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2. और अगर उल्टा आपको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ओके तो वो क्या हो जाएगा? v2 अपॉन v1, v2 अपॉन v1. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ आफ्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट अस स्टडी अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यू कैन सी दैट आउट ऑफ द टू मीडियम, if your first medium is what? Vacuum or air. If medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 1 is considered to be what? Is considered with respect to vacuum. This is called absolute refractive index. तो see here, अगर दोनों में से एक मीडियम आपका क्या हो गया? एयर या वैक्यूम हो गया, एयर या वैक्यूम, तो जो भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जैसे फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम m is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in medium. वैक्यूम में लाइट का स्पीड अपॉन मीडियम में लाइट का स्पीड. सो nm is equal to c upon v. c is what? Speed of light in vacuum. Speed of light in vacuum कितना होता है? c का वैल्यू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. लाइट की स्पीड वैक्यूम में यार कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होती है. ओके सो वंस अगेन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, लेकिन इसमें से एक मीडियम क्या ले लेने का? वैक्यूम, और दूसरा कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Okay, so it is c upon v, speed of light in vacuum upon speed of light in medium. And now some examples. Absolute refractive index of air is how much? 1.0003, which is approximately equal to 1. Then absolute refractive index of water, that is 1.33. Then absolute refractive index of glass 1.52. In this way we can study about regarding various absolute refractive indices. Okay students. So by this we end our session students. In the next session we are going to study regarding lenses, spherical lenses. Till then, thank you students.